Hello? आप सुन रहे हैं मुझे? Yes, sir. ओके. एक मिनट, मैं इसका ये माइक का देख रहा हूँ. बहुत नीचे था. मेरे ख्याल से अब ठीक है. कल जो है ना, हम ये रिजल्ट हमने कल प्रूव किया था रिगार्डिंग दीज साइनड मेजर्स. ठीक, दिस लेक्चर इज गोइंग अगेन इज कंटिन्यूएशन, जैसा कि आपको पता है, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज लेक्चर. एंड टुडे विल बी एक्चुअली गोइंग टू प्रूव द Hahn decomposition theorem. And as you'll see that this result will play a pivotal role in the proof of the Hahn decomposition theorem. In fact, we'll use this result as a lemma there. ठीक है. तो now I'll first ideally I should first state this ना Hahn decomposition theorem, but before stating this मैं कुछ क्विक remarks यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है. Some remarks. We know that a measure is monotone, right? And it can be proved actually the properties of the measure. ठीक है ना? मतलब if mu is a measure and a comma b are mu measurable, with a contained in b, suppose, then mu of a is less than or equal to mu of b. And you can prove this quite easily actually. आप क्या करिए, आप ये पिक्टोरियली ये जो इन्फॉर्मेशन है a is contained in b, इसको देखिए आप पिक्टोरियली. सबसे पहले let's suppose this is b, a is contained in, so therefore this is a. Suppose this is a, the interior portion. Sorry, this interior, this territory inside b, let's suppose it's a. ठीक. अब ये जो रिंग शेप रीजन आपको यहाँ दिख रहा है, if you denote this by say e, right, then e and a are measurable. Why? Because this a and b, by the way, are measurable by our assumption. Now e जो है, e can be written as b minus a, which is b intersected with a complement, so therefore it's measurable. So e and a are measurable and they are disjoint also. So using the additivity of measure mu, we get this. We get mu of a plus mu of e. This will be equal to mu of the union of a and e, which is b. Okay. So mu of b is equal to mu of a. मैं इसी को वापस लिख रहा हूँ, plus mu of e. Right. Now mu in this case is a measure. Measure is non-negative. So therefore this being mu of a plus mu of e, this will be greater or equal to mu of a. Right?
If you compare this and this, the relation is this will be greater than mu of A, because mu is a measure, so mu of E will be greater or equal to 0. So that is the reason mu A plus mu E is greater or equal to mu A. Mu A plus mu is mu B, so that means we get this. We get mu of B is greater or equal to mu of A. And this is the monotonicity, right? और अगर यहाँ आपने ऑब्जर्व किया होगा, to prove this monotonicity we used non-negativity of the measure. We used the fact that this is greater or equal to 0, and then I concluded that mu B is greater or equal to mu A. So monotonicity के लिए we require non-negativity. Now non-negativity is not present in signed measure, so we do not expect monotonicity in a signed measure. ये याद रखेंगे आप. So in general, basically, if you take a signed measure, in general, a signed measure need not be monotone. ये आपको याद रखना है, बिकॉज मोनोटोनिसिटी में जो है ना वो नॉन नेगेटिविटी इस्तेमाल होती है, ठीक. और सिंस साइनड मेजर इज इन जनरल नॉट नॉन नेगेटिव, सो यू कैन नॉट क्लेम मोनोटोनिसिटी. ये याद रखेंगे आप. एक और फैक्ट अबाउट दी साइनड मेजर्स, और वो ये है, ये मैं थोड़ा प्रॉपरली लिख रहा हूँ. In fact, जो है ना, we'll actually record this as a theorem. It's a nice fact about these signed measures. Let X be a non-empty set, comma, this be a sigma algebra of subsets of X, and mu from capital sigma into minus infinity plus infinity be a signed measure full stop. Now if A be a positive set, if A be greater or equal to 0, आप वो कल वाली notation याद करिए, this means that A is a positive set. If A be a positive set with respect to this signed measure, with respect to mu, then you consider this function, then nu from capital sigma into, मैं फ़िलहाल ना यहाँ साइलेंट रह रहा हूँ. I'll ask you, आप मुझे बताएंगे what is the codomain of nu. Basically I'm going to define a function nu defined on capital sigma, and you will tell me कि what is the codomain of this nu. और उसके लिए आप क्या करेंगे, in order to determine what is the codomain of nu, you'll actually examine the action of nu. ठीक है, तो मैं आपको इसका action अब बता रहा हूँ. Then nu from this codomain, मैं deliberately silent रह रहा हूँ अभी. This defined by this rule. You have to now examine the action of nu, and you have to tell me then what is the codomain of nu. Now nu at E, where E is coming from, of course, from the sigma algebra, because we are claiming that domain for nu is capital sigma, so E has to be coming from capital sigma, and we define nu of E as mu of E intersected with A. So we are using this signed measure to define another function nu, और वो काम ऐसे करता है. nu when evaluated at E is mu of E intersected with A, where A is this A, जिसके बारे में हमें पता है कि that it is a positive set with respect to signed measure mu. अब now you have to examine the action of nu, and now tell me what is the codomain of nu. न्यू वैल्यूज कहाँ होंगे?
हाँ बताइए. It's not that difficult अगर आप ये जहन में रखेंगे. What's A is a positive set with respect to mu. A is a positive set with respect to mu means what? Means signed measure, rather I should say mu signed measure of every measurable portion of A is greater or equal to 0 because A is a positive set. Now what is this? अगर आप इसे देखेंगे, what is this? E is coming from sigma algebra. A is a positive set, so A is also coming from the sigma algebra. So this actually being intersection of two sigma algebra members is coming from the sigma algebra, right? So this is a sigma algebra element. ठीक? And this being E intersected with A, so that means it's a portion of A. So it's actually a measurable portion of A. और A जो है, A is a A is a positive set. So therefore the mu signed measure of this measurable portion of A will be greater or equal to 0, and that is the reason this nu, it takes values in 0 infinity. So it's a function defined on sigma algebra, takes values in 0 infinity. ठीक है. Theorem says this function, because we are ये जो information है मैं इसको as a theorem record कर रहा हूँ. The theorem says this function nu, which is defined on sigma algebra, takes values in 0 infinity and is defined like this, is actually a measure. Is a measure on the sigma algebra, capital sigma. So basically मैं आपको ये theorem में बता रहा हूँ कि that using a signed measure and a positive set A, you can create a measure. और वो काम ऐसे करता है. It is possible to create a measure. First I'll give a proof of this. Proof. इसकी प्रूफ के लिए चूंकि न्यू का जो डोमेन है इट्स ऑलरेडी अ सिग्मा अलजेब्रा एंड देयरफॉर अ सेमरिंग, तो मुझे बस वो दो चीज़ें वेरीफाई करनी है. पहले ये कि न्यू एट एम्प्टी सेट इज़ 0 और दूसरा एडिटिविटी इसकी. तो सबसे पहले हम न्यू की ना वो पहली रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे. मैं आपको दिखाऊंगा न्यू एट द एम्प्टी सेट इज़ 0. तो इसके लिए आप क्या करेंगे? will directly go for the computation. Nu of the empty set. And nu कैसे काम करता है? Nu of E is mu of E intersected with A. So अब क्या करेंगे आप? आपको simply E की जगह empty set रखना है. So therefore it will be mu of E की जगह empty set intersected with A. Now empty set intersected with A is the empty set. So this is mu of the empty set, and mu being a signed measure, so mu of the empty set will be 0. So nu has the first condition, or nu satisfies the first condition for being a measure. Next, if En running from 1 to infinity be a pairwise disjoint sequence of capital sigma members, rather actually I should more technically speaking I should actually write be a sequence of pairwise disjoint capital sigma members. That is better. इससे बेहतर वही है. We are saying थोड़ा सा क्लियर नहीं है, वही वो बेहतर है जो मैं अभी कह रहा था आपसे. आप लिखेंगे if this be a sequence of, if this be a sequence of pairwise disjoint capital sigma members, we'll write this. Then nu of union n running from 1 to infinity En. What will be this by definition? Because nu of E is mu of E intersected with A, और E की जगह यहाँ union है, so therefore it will be mu of union
n running from 1 to infinity, en, ये आ गया आपका e, then we have intersected with a. So this will be this by definition of nu. And nu works like this. Nu of e is mu of e intersected with a. यहाँ e की जगह ये union है. Now what is this? This is mu of, I can distribute this intersection over the union and I'll get this union n running from 1 to infinity, en intersected with a. Okay. Now what is this? This is a part of en and it's actually a sigma algebra member. This en intersected with a जो है, this belongs to the sigma algebra. क्यों? Because ens are coming from sigma algebra and a being a positive set is also coming from sigma algebra, so the intersection will be a sigma algebra member because sigma algebra is closed under countable intersections. So जिन सेट्स का आप यहाँ यूनियन देख रहे हैं, these sets are all coming from the sigma algebra and they are pairwise disjoint also. Why? Because this is part of en. ये जो ना, this intersected with a is clearly part of en. Ens are pairwise disjoint, so therefore these parts will be pairwise disjoint. So I can use the additivity of mu because mu is sigma additive, being a signed measure. So this will be summation n runs from 1 to infinity, mu of en intersected with a. Now what is mu of summation को हम ऐसे ही रखेंगे, n running from 1 to infinity, ये ऐसे ही रखेंगे. mu of en intersected with a जो है, अगर इसको new notation में लिखा जाए, this will be nu of en. ठीक. So that means what? That means nu of the union is this. That means nu is additive. So nu has both the requirements, so nu is a measure. So the moral of the story is this: from a signed measure and a positive set, you can create a measure. If you possess a signed measure and a positive set with respect to that signed measure, you can create a measure using these two ingredients. And the recipe is this: nu of e is mu of e intersected with a, where mu is the signed measure and a is the positive set with respect to the signed measure mu. ठीक. Now likewise, ये मैं आपके लिए exercise दे रहा हूँ. I won't go into the proof of this. आप एक और चीज़, you can also create a measure using a negative set. यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना, we are creating a measure using a signed measure and a positive set. The question is, what instead of a positive set, if we have a negative set? You can again create a measure, but you have to do a slight moderation or slight modification. This is another theorem. ये आपके लिए exercise है. Let X be a non-empty set, capital sigma be a sigma algebra of subsets of X and mu from capital sigma into minus infinity plus infinity be a signed measure. Full stop. If B is a negative set, और उसको हम कैसे denote करते हैं? We write this: B less or equal to 0. If B is a negative set with respect to the signed measure mu, then the set function nu from capital sigma into 0 infinity taking values in 0 infinity, defined by this rule: nu when evaluated at E, where E is of course coming from the sigma algebra, is defined as
if I write this, if I write only this mu of E intersected with B, मैं बस ना ऊपर वाली थ्योरम को देख रहा हूँ, जिस तरह से वहाँ हमने पॉजिटिव सेट इस्तेमाल करके मेजर क्रिएट किया था, मैं बेसिकली वही सिचुएशन को ना यहाँ ना वो रेप्लिकेट कर रहा हूँ. अब मुझे बताइए, वुड दिस बी सफिशेंट और दिस रिक्वायर्स सम फर्दर मॉडरेशन? Will this be sufficient? Can I define nu E as mu of E intersected with B, and then can I claim that it's a measure? आपको यहाँ थोड़ी सी मॉडरेशन करनी है. क्यों? बिकॉज यहाँ जो B है, इट्स अ नेगेटिव सेट. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेजरेबल पोर्शन ऑफ B. B इज अ नेगेटिव सेट, सो देयरफॉर म्यू ऑफ दिस, बिकॉज म्यू जो है, सॉरी, B जो है, it's a negative set with respect to mu. This is a measurable portion of B. B is a negative set with respect to mu, so therefore the mu measure of this measurable portion of B will be less or equal to 0. ठीक? So it will be lesser. So this requires moderation. और moderation क्या है? Because it's less or equal to 0, and I want this to be greater or equal to 0. उसके लिए क्या चाहिए, करना चाहिए? So I should attach a minus sign artificially. So nu of E is defined as minus times E intersected with B, where B is a negative set with respect to mu. Now अगर आप ऐसा करते हैं, you can easily see that this nu is a measure on sigma algebra, capital sigma. Then this nu is a measure on capital sigma. ठीक है, तो ये आपको अब याद रखना है. अगर आप पॉजिटिव सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप लेंगे, आप मेजर ऐसे डिफाइन करेंगे, mu of E intersected with A, where A is the positive set. हाँ, अगर आप पॉजिटिव सेट की जगह नेगेटिव सेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको माइनस साइन बाहर रखनी है. अगर आप मेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह से होगा वो. ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज है आपके लिए, और ये प्रूफ जो है वो बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे है. ठीक है, फिर कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंस इट्स अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, और वो तो होगा ही इसमें. अगर आपने यहाँ ये मतलब ना, ये अगर ये हमने यहाँ आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, न्यू हैज़ दीज टू प्रॉपर्टीज़, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दीज टू प्रॉपर्टीज़ आर possessed by mu. एक्चुअली वो जो म्यू वाली प्रॉपर्टीज़ है वही यहाँ न्यू में ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है, और नीचे भी वही होगा. यहाँ भी कोई डिफरेंट सिचुएशन नहीं है. यहाँ भी वो म्यू वाली प्रॉपर्टीज़, मतलब जो म्यू में प्रॉपर्टी है, टेक्स एम्प्टी सेट टू 0, वही प्रॉपर्टी न्यू में भी रिफ्लेक्ट होगी, और म्यू की एडिटिविटी भी न्यू में रिफ्लेक्ट होगी, जैसे यहाँ ऊपर रिफ्लेक्ट हुई थी म्यू की एडिटिविटी न्यू में रिफ्लेक्ट. ठीक, सो कोई नया आइडिया इसमें नहीं है, सो आई लीव दिस टू यू. ठीक है, यहाँ में ये अगर आप ना इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये आपके लिए एक मतलब ना वो इंसाइटफुल चीज़ है. इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि दैट यूजिंग अ पॉजिटिव सेट एंड अ साइनड मेजर you can create a measure, and using a negative set and a signed measure you can create a measure. Basically using a signed measure and a negative set with respect to that signed measure you can create a measure, and similarly using a signed measure and a positive set with respect to that signed measure you can create a measure. Now we can state and prove the Hahn decomposition theorem. नया पेज में स्टार्ट कर रहा हूँ. This is the Hahn decomposition theorem. Hahn decomposition theorem. First I'll give the statement. हाँ,
हाँ, एक छोटी सी चीज़ जो मुझे कहनी चाहिए थी आपसे बिफोर राइटिंग दिस स्टेटमेंट, वो ये है, हर्न डिकम्पोजिशन थ्योरम जो है ना, एक्चुअली अगर देखा जाए इट्स एन एग्जिस्टेंस थ्योरम. इट गारंटीज एग्जिस्टेंस ऑफ अ हर्न डिकम्पोजिशन. ठीक है. अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये एक चीज़ आप नोटिस करिए यहाँ. You assume that mu is a signed measure and A is a positive set with respect to this signed measure mu. Mu is a signed measure. You can easily check that minus mu is also a signed measure. In fact, you can easily check this. If mu is a signed measure, if mu is a signed measure, alpha is a scalar, then alpha mu is a signed measure. ठीक है. इन फैक्ट असल में ये है, अगर ना देखा जाए तो ज़्यादा जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, इफ़ म्यू एंड न्यू आर signed measures, alpha comma beta are scalars, then alpha mu plus beta nu, ये जो है, this is a signed measure. And this straight away follows from the definition. इसमें आप कुछ करना ही नहीं है. This directly follows from the definition of a signed measure, that this basically linear combination of signed measures is a signed measure. ठीक है. This follows from the definition actually. इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे नहीं लगता. एक मिनट मैं इसको देख रहा हूँ. इसमें शायद वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है. सपोज म्यू टेक्स इन्फिनिटी, दिस टेक्स माइनस इन्फिनिटी, हाँ वो मसला हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली अगेन फिर से यू हैव टू अस्यूम दैट वन ऑफ देम इज अ फाइनाइट साइंड मेजर. मैं अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूँ बिकॉज इसमें ना आई सी अ प्रॉब्लम हियर. यहाँ you cannot claim this for general signed measures. You have to assume, or you have to not restrict one of these signed measures. You have to assume that one of them is finite, because otherwise I see a problem here. One of them has to be finite. वो है यहाँ. बट ये जो इससे पहले जो मैंने यहाँ लिखा था, स्केलर मल्टीपल ऑफ अ साइंड मेजर इज अ साइंड मेजर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इन पर्टिकुलर इफ म्यू इज अ साइंड मेजर, माइनस म्यू इज ऑल्सो अ साइंड मेजर. अब जो मैं आपसे कह रहा था वो ये है, वी हैव, अगर ये सिचुएशन को आप देखेंगे, ये वाली सिचुएशन, यहाँ म्यू इज अ साइंड मेजर एंड a is a positive set with respect to mu. Now mu is a signed measure, minus mu will be also a signed measure. Minus mu is also a signed measure. Right? Now a is positive with respect to mu. What do you think? How will this a is going to be related to this minus mu? With respect to mu, I know that a is a positive set. Now my question to you is, what would be its relation with minus mu? इसको guess करना ज़्यादा कोई difficult नहीं है. It will be actually a negative set. And a will be a negative set with respect to minus mu. And conversely, if it is a negative set with respect to minus mu, then it will be a positive set with respect to mu.
ठीक है, अब ऐसा मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ? अगर आपको याद होगा, व्हाट इज अ Hahn decomposition? Hahn decomposition is an ordered pair A comma B, where the first component is a positive set, second component is a negative set, and the two components are pairwise disjoint and their union is X. ये होती है Hahn decomposition. ठीक, मेरा जो पॉइंट है जो मैं यहाँ ना असल में रखना चाहता हूँ वो ये है, इफ X has a Hahn decomposition with respect to a signed measure mu, then this X has a, that I should write, also has a, then this X also has a Hahn decomposition with respect to minus mu. If it has a Hahn decomposition with respect to mu, it will have a Hahn decomposition with respect to minus mu, and conversely. और इसकी जस्टिफिकेशन जो है वो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है. लेट्स सपोज A comma B is a Hahn decomposition with respect to mu. If A comma B is a Hahn decomposition of X with respect to mu, then B comma A is a Hahn decomposition is a Hahn decomposition of X with respect to minus mu. So if this ordered pair exists, then this ordered pair also exists. यही मैं आपसे कह रहा था. If it has a Hahn decomposition, if X has a Hahn decomposition with respect to mu, then it has a Hahn decomposition with respect to minus mu. And conversely, if it has a Hahn decomposition with respect to minus mu, then it will have a Hahn decomposition with respect to mu also. ठीक है, बस एक ही Hahn decomposition होनी चाहिए, either with respect to mu or with respect to minus mu. Now so we have to establish the existence. In view of this observation, it is sufficient to establish the existence with respect to one of the signed measures, mu or minus mu. Because if you have established existence with respect to mu, existence with respect to minus mu will be automatically established. I think I have made my point, so I'll directly go to this statement now. This is the Hahn decomposition theorem now. Statement is this. ये statement इसमें ना, इसमें technically we say it's a mouthful. इसमें लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है इसका, ये वो आप देखेंगे. लेट X बी अ नॉन एम्प्टी सेट, capital sigma be a sigma algebra of subsets of X and mu from capital sigma into minus infinity plus infinity be a signed measure.
be a standard measure, then this X has a Hahn decomposition. Say A comma B, it has a Hahn decomposition A comma B with respect to this mu. ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन ये है, X has a Hahn decomposition. So this settles the existence issue. ठीक है, अभी इसमें और भी है. मैंने कल ही आपसे कहा था, जब भी इनफैक्ट आपने ये ना नोटिस भी किया होगा, आई ऑलवेज राइट अ Hahn decomposition, आई डोंट राइट दी Hahn decomposition, because actually Hahn decompositions are not unique. They are unique but in a different sense. Measure theoretically they are unique. ठीक है, not in the exact sense. Hahn decompositions are not unique in the exact sense. They are unique in some different sense. और वही मैं अपना बताने जा रहा हूँ कि किस सेंस में ये यूनिक होती है. Further, पहले तो existence है, A comma B is a Hahn decomposition of X with respect to mu. Now further, if A1 comma B1 be some other Hahn decomposition of X with respect to mu, then क्या होगा? The following things will be true. The first thing is this: mu of A minus A1 union A1 minus A, ये जो set है, which is the union of these two differences, इसका जो mu standard measure है, this will be 0. ठीक है. Second thing, mu of B minus B1 union B1 minus B, this will again be 0. Again this is union of these two differences. में से मुझे कोई बता सकता है कि ये जो है, ये जो unions आप देख रहे हैं, the union of these differences, what is this called in set theoretic terminology? Symmetric difference. It is the symmetric difference. So the mu standard measure of the symmetric difference of A and A1 is 0, and the mu standard measure of the symmetric difference B with B and B1 will be 0. ठीक है, so the symmetric differences will be 0 in terms of the measure, in terms of the standard measure actually. ठीक है, ये pictorially आप देखेंगे. What does this mean? Let's suppose this is A. Okay, and let's suppose this is A1.
तो यहाँ जो ये सिमेट्रिक डिफरेंस होगी व्हाट विल बी दैट? वेल इट इज a minus a1 union a1 minus a. So that means सिमेट्रिक डिफरेंस में एक तो ये टेरिटरी होगी और दूसरा और कलर लेंगे, ये टेरिटरी होगी. इन दो टेरिटरीज का जो यूनियन है दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस. And this union, which is actually the union of these two territories, this is the portion which actually sets these two sets A and A1 different. This makes them different. This territory, ये territory और ये territory जो ना, these two territories are actually ना distinguishing or setting them different, A and A1. Because this territory is the set of those points which are in A but not in A1, and this territory is the set of those points which are in A1 but not in A. तो ये वो territory है जो, जब आप ये union लेंगे, this is the set actually which sets A and A1 or which projects these two sets A and A1 as different sets. ठीक है ना. और यहाँ जो थियरम है यह आपको बता रही है कि ये जो चीज़ है जो असल में इन दो को प्रोजेक्ट कर रही है एज डिफरेंट सेट्स, द मेजर ऑफ दिस टेरिटरी इज 0. सो इन दिस सेंस ए इज इन टर्म्स ऑफ दिस मेजर, मैं इसको कहूँगा ए इज मेजर थेरेटिकली सेम एज A1, बिकॉज जो सेट इनको ना अलग अलग कर रहा है उनका उसका मेजर 0 है, वो बेचारा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं होगा फिर. एंड सेम इज द केस विद B and B1. सो इन दिस सेंस B इज सेम एज B1. अगेन आई विल से दैट इट इज एक्चुअली B इज एक्चुअली मेजर थेरेटिकली सेम एज B1. So that means the Hahn decomposition, अब आप क्या देख रहे हैं, A1 is measure theoretically same as A and B1 is measure theoretically same as B. So that means this Hahn decomposition A1 B1 is measure theoretically same as the previous Hahn decomposition AB. तो यहाँ जो uniqueness है, it is actually measure theoretic uniqueness, not the exact uniqueness. अभी इसमें कुछ और भी है. The third thing is mu of A intersected with A will be same as mu of A1 intersected with A, and this will be true for all the A's in capital sigma. ठीक. And the fourth property is mu of B intersected with A will be same as mu of B1 intersected with A, and again this will be true for all the A's in sigma. अगर वो अभी वाली थियरम जो अभी मैं आपको दिखा रहा था, जिसमें मैंने आपको दिखाया यूजिंग अ साइनड मेजर एंड अ पॉजिटिव सेट यू कैन क्रिएट अ मेजर, अगर आप वो तो वाली थियरम ना वो याद करेंगे, व्हाट कैन यू टेल मी अबाउट दिस? This is precisely the recipe of the measure which we can create using mu and the positive set A. Remember that A is the first component in the Hahn decomposition, AB. So A is a positive set. So this is precisely the recipe of the, precisely the description of the measure which we can create using signed measure mu and this positive set A, which is positive with respect to mu. ठीक है ना. What about this? This would be the description of the measure which we can create using positive set A1 and signed measure mu. और ये जो तीसरी चीज़, ये तीसरी जो यहाँ ये information है यहाँ theorem, it tells us these two are same.
ठीक है, आप समझ रहे क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, ए बी इज अ हर्न डिकम्पोजिशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू म्यू, सो ए इज अ पॉजिटिव सेट. So that means using this a and this mu, I can create a measure. Again, a1 b1 is a Hahn decomposition of x with respect to mu, so a1 is a positive set. a1 is also a positive set. So I can also create a measure using a1 and mu. और ये जो तीसरी information यहाँ, ये जो third point यहाँ आप देख रहे हैं, it tells us those two measures will be same. ठीक है. Similarly, using this negative set, because AB is a Hahn decomposition, so B is a negative set. So using this negative set B and this signed measure mu, you can create a measure. ठीक. And using this negative set B1 and signed measure mu, you can create another measure. ठीक. और ये जो तीसरी ये जो fourth point है हमारा यहाँ, this tells us those two measures will also be same. ठीक है. So let's prove this first. A theorem की elaboration थी. Now I'll give the proof. Now what is mu? Mu is a signed measure. Signed measure में हमें पता है या तो ये इन्फिनिटी लेगा या माइनस इन्फिनिटी. दोनों इन्फिनिटीज इसमें मुमकिन नहीं है. अब यहाँ कौन सी इन्फिनिटी म्यू ले रहा है और ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, वी डोंट नो दैट, वी डोंट नो एनीथिंग, बट वी कैन एंश्योर दैट म्यू नेवर टेक्स इन्फिनिटी. आप बता सकते कैसे? अब मेरा पॉइंट पहले समझिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ. म्यू इज़ अ साइंड मेजर, इट इज़ गिवन टू बी अ साइंड मेजर, एंड बाय डेफिनेशन साइंड मेजर जो है ना, वो दोनों इन्फिनिटीज अस्यूम नहीं कर सकता. तो म्यू भी दोनों इन्फिनिटीज अस्यूम नहीं करेगा. या तो ये प्लस इन्फिनिटी अस्यूम करेगा या माइनस इन्फिनिटी. अगर ये माइनस इन्फिनिटी अस्यूम कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हमारी प्रॉब्लम है विद प्लस इन्फिनिटी ना. अगर ये प्लस इन्फिनिटी अस्यूम कर रहा है म्यू, what modification or what correction would you suggest so that we can ensure that plus infinity is not assumed? मैं फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ. म्यू जो है वो साइंड मेजर है, तो दोनों इन्फिनिटीज अस्यूम नहीं करेगा. मैं चाहता हूँ कि इट शुड नॉट अस्यूम प्लस इन्फिनिटी. मतलब जिस मेजर के साथ मैं काम कर रहा हूँ ना यहाँ, मैं चाहता हूँ कि वो प्लस इन्फिनिटी अस्यूम नहीं करना चाहिए. तो व्हाट शुड आई डू? मैं पहले उसको देखूंगा. इफ इट इज नॉट assuming plus infinity, then I am fine, I'll work with that. But if it is assuming plus infinity, what I'll do, I'll replace the measure by minus mu. I'll replace mu by minus mu. So if mu is assuming infinity, minus mu जो है वो infinity assume नहीं कर सकता, because अगर minus mu infinity assume करेगा, then it means mu assumes both the infinities, which is not possible. So if necessary, by replacing mu by minus mu, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी ना जो ये थियरम पे, उस पे उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया है. इफ़ देयर इज़ अ हार्न डिकम्पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू माइनस म्यू, देयर विल बी अ हार्न डिकम्पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू म्यू आल्सो. और जो बाकी वाली कंडीशंस भी है जो यहाँ थियरम में बाकी वाली चीज़ है, इस पे भी, इन पे भी कोई असर नहीं पड़ता है. इफ़ यू रिप्लेस म्यू बाय माइनस म्यू, oh, we may replace mu by minus mu, it's not a big deal. If necessary, we may replace mu by minus mu and ensure that mu never assumes infinity. मैं ये लिख रहा हूँ. By replacing mu with माइनस म्यू, लेकिन ये होगा SOS अगर ज़रूरत पड़े तो. इफ़ नेसेसरी
we may assume mu of e is not infinity, means less than infinity, for all e's in the sigma algebra. तो ये किया जा सकता है. It's a simplifying assumption and it will help us to prove this theorem. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? Let fancy f be equal, ये ध्यान से देखिएगा कि क्या है इसमें. Fancy f is going to be collection of what? Collection of all those c's contained in x. मतलब we are collecting subsets of x. Now question is which subsets? उसका आंसर हमें क्वालिफायर से मिलेगा और वो क्वालिफायर ये है such that c is a positive set with respect to mu. समझ रहे क्या कर रहा हूँ मैं? आई एम कलेक्टिंग ऑल द पॉजिटिव सेट्स विद रेस्पेक्ट टू म्यू और कलेक्शन को हम फैंसी एफ से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है. इसके बाद हम एक और चीज़ लेंगे अभी. लेट फैंसी एफ बी इक्वल टू दिस एंड अभी मैं एक और चीज़ करूँगा इसमें. एंड स्क्रिप्ट ए be defined as, we are defining both these collections, so ऐसे सिंबल आएगा. and script a be defined as, इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो fancy of members हैं इनके हम mu measures compute करेंगे या mu signed measures कहिए. and script a be defined as mu of, it's a collection and it is made up of these signed measures of elements of fancy f. That means basically we are collecting signed measures of these positive sets with respect to mu, such that c varies over fancy f. ठीक है. यहाँ आप ऐसा करिएगा, यहाँ आप एंड नहीं, आप ये कॉमा मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें एक और चीज़ अभी लेने जा रहा हूँ. यहाँ कॉमा करेंगे हम. कॉमा स्क्रिप्ट ए बी डिफाइंड लाइक दिस एंड इसके बाद एक और चीज़ मैं डिफाइन कर रहा हूँ और वो क्या होगा? दैट विल बी लिटिल ए. और ये लिटिल ए क्या होगा? दिस विल बी डिफाइंड एज सुप्रीमम ऑफ script A. What is script A? Script A is, script A members क्या है? They are signed measures of these C's which are coming from fancy F. Fancy F is collection of positive sets. So that means these script A members, they are non-negative extended real numbers. In fact, they are non-negative numbers. Real numbers. क्यों? Because we have already ensured that mu is never infinity. C जो यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रिप्ट A में जो C है जिस पर आप ये mu ले रहे हैं, इट्स अ पॉजिटिव सेट. तो इसका जो mu है वो माइनस इन्फिनिटी नहीं हो सकता बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव सेट, और प्लस इन्फिनिटी भी नहीं हो सकता. क्यों? बिकॉज वी हैव ensured that mu never assumes infinity. Mu is always less than infinity. So these numbers will be then what? Minus infinity भी नहीं हो सकते, infinity भी नहीं हो सकते, और ये non-negative. So that means they are actually non-negative real numbers. So this is set of non-negative real numbers. और इस सेट का हम सुप ले रहे हैं, सुप्रीमम, और उसे हम लिटिल a से डिनोट कर रहे हैं. My first claim is we first claim that ये जो little a आप यहाँ देख रहे हैं, मेरा claim ये है कि it's a finite number. We first claim that this little a is less than infinity. और ऐसा क्यों?
for if little a is equal to infinity, then क्या होगा फिर, then for each n in the set of natural numbers we can find an en in fancy f such that n is less or equal to mu of en. ये किया जा सकता है अगर a infinity है. Basically when you say a is infinity, so basically you are saying that this script a is an unbounded set. It's an unbounded set. अगर ये unbound a अगर infinity है, then script a becomes an unbounded set, unbounded from above. ठीक. Now if it is unbounded from above, so no natural number will act as an upper bound for this set. कोई भी natural number इसका upper bound नहीं होगा. If you pick a natural number, that natural number won't be an upper bound for this set. And won't be an upper bound for this set means this: there will be an element in this script A, and the elements of script A are measures of mu signed measures of elements of fancy f. So that means basically there will be an element in fancy f, जिसको मैं यहाँ e sub n नाम दे रहा हूँ. If you pick a natural number n, is ये natural number n जो है वो script a का upper bound नहीं हो सकता. So that is the reason script a में एक element होगा, और चूंकि इसके elements है mu signed measures of elements of fancy f, so basically this means there will be a fancy f member जिसको मैं यहाँ e sub n से denote कर रहा हूँ और उस fancy f member में ये property होगी, n will be less than or equal to mu of en. और ये हम हर एक n के लिए कर सकते हैं coming from the set of natural numbers. अब इसके बाद आप क्या करेंगे, let e be equal to union of these ens. ठीक है. Then now these ens, they are coming from fancy f. Fancy f means they are positive sets. Positive sets means they are sigma algebra members. So ens are sigma algebra members. This is countable union of ens. So therefore it will be in sigma algebra, because sigma algebra is closed in under countable unions. So then E belongs to this sigma algebra. And my question to you is, what would be the measure of this E? What would be mu of E? मैं आपसे कह रहा हूँ this will be greater or equal to mu of En, and this will be true for all the n's in the set of natural numbers. आप मुझे बताएंगे क्यों. इनफैक्ट मैं यहाँ कुछ और भी अभी लिखना चाहूँगा. In the first place, mu of E will be greater or equal to mu of En, and mu of En जो है, we know that it is greater or equal to n, so mu of E will be greater or equal to n, and this will be true for every n in the set of natural numbers. मतलब mu of E will be greater or equal to every natural number. क्यों होगा ऐसा? ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे आता है. mu of En जो है ये कैसे होगा greater or equal to n, because this is how we introduce these ens. My question to you is this: why this is true? Why mu of E is greater or equal to mu of En? हाँ जल्दी बताइए. इसको आप इसका रीज़न असल में ये है कि जब आप ना ये साइनड मेजर को इस्तेमाल करते हैं फॉर पॉजिटिव सेट्स, इट इज़ मोनोटोन. असल रीज़न यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ. अब यहाँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ से आप इसको कैसे देख सकते हैं वो आप ऐसे करिए
you write mu of E as E intersected with E. लिख सकते हैं ऐसे? और mu of En को हम लिखेंगे En intersected with E. E intersected with E is E and En intersected with E is En. So this is actually mu of E and this is actually mu of En. Right? Now what is E? आप याद करिए. E जो है, it is union of Ens. What are Ens? Ens are coming from fancy F, means they are positive sets. और ये मैंने कल आपको दिखाया था. Countable union of positive sets is a positive set. So E is a positive set. ठीक है? आपको नहीं लगता ये वो वाली डिस्क्रिप्शन आ रही है जो ना वो हमने जहाँ मैंने आपको दिखाया था, using a measure and a positive set, using a signed measure and a positive set you can create a measure. ये वही है यहाँ. This mu is a signed measure, this E is a positive set. ठीक, so ये वही आ रहा है. अगर आप डिफाइन करेंगे nu of B as mu of E intersected with B, this description will actually define a measure. This will be a measure. अगर हम nu को ऐसे define करेंगे. ठीक है? Now what is nu of, if this is nu, what will be nu of E? Well, that will be mu of E intersected E, that is mu of E. And what would be nu of En? Nu of En जो है, that would be mu of E intersected with En, which is equal to mu of En, because E intersected with En is En. So nu of E is mu of E and nu of En is mu of En. Now since nu is a measure and En is contained in E, so it will follow what? It will follow, because nu is a measure, or measure is monotone. So using the monotonicity of nu, using monotonicity of nu, we can conclude that nu of E is greater or equal to nu of En. What is nu of E? Nu of E is mu of E. And what is nu of En? Nu of En is mu of En. So basically, अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ actually that mu of E is greater or equal to mu of En, जो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ. हालांकि साइनड मेजर इन जनरल मोनोटोन नहीं होता, लेकिन यहाँ मोनोटोनिसिटी होगी, बिकॉज यू आर एक्चुअली डीलिंग विद पॉजिटिव सेट्स. दिस इज द रीजन. ठीक है, तो ये हो गया. एंड दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू एन, वो हमें ऑलरेडी पता है कैसे. सो अब यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है? यहाँ इन्फॉर्मेशन है कि म्यू ऑफ ई इज ग्रेटर और इक्वल टू एवरी नेचुरल नंबर. वो कब पॉसिबल है? व्हेन इट इज इन्फिनिटी. Therefore, mu of E, because it's greater or equal to every natural number, so it must be infinity. And this is a contradiction, which is a contradiction. क्यों है contradiction? Because जो हमने ऊपर वो adjustment करी है, उसके हिसाब से we have ensured that mu never assumes infinity. ठीक है, so this is a contradiction. And contradiction means our claim is established, because if you go against the claim, you get a contradiction. मेरा claim था a is less than infinity. If you assume a is infinity, you get a contradiction. Full stop. This establishes or claim that
this establishes our claim that a is less than infinity. This establishes our claim that a is less than infinity. Full stop. ठीक है. बाय द वे एक चीज़ मैं यहाँ आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ. ये जो स्क्रिप्ट ए है ना, इट इज़ नॉन एम्प्टी ऑल्सो. आप ये बता सकते हैं कैसे? इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? दे आर म्यू साइनड मेजर्स ऑफ पॉजिटिव सेट्स. फाई इज़ अ पॉजिटिव सेट, एम्प्टी सेट इज़ अ पॉजिटिव सेट. तो उसका जो म्यू है वो इसमें आएगा, एंड म्यू ऑफ एम्प्टी सेट इज़ ज़ीरो. ठीक है. तो स्क्रिप्ट ए में कम से कम ज़ीरो तो रहता है. सो स्क्रिप्ट ए इज़ नॉन नेगेटिव, सॉरी नॉन एम्प्टी. स्क्रिप्ट ए जो है, ये जो सेट है, इट्स अ नॉन एम्प्टी सेट ऑल्सो. तो जो याद, अदरवाइज ना यहाँ एक टेक्निकलिटी अराइज होगी, और वो ये है कि अगर स्क्रिप्ट ए एम्प्टी होगा ना, तो इसका जो सुप होगा दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी. सो दैट मीन्स इन दिस केस, इन दैट केस, जो यहाँ असल में नहीं है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर होता तो क्या प्रॉब्लम होती. अगर स्क्रिप्ट ए इन्फिनिटी होता ना, तो फिर देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ. अगर स्क्रिप्ट ए एम्प्टी सेट होता, then this little a would have been minus infinity. लेकिन यहाँ वो मुमकिन नहीं है, बिकॉज स्क्रिप्ट ए जो है वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इसमें ज़ीरो रहता है. सो लिटिल ए जो है वो इट्स इंडीड अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर. ये क्यों मैं कह रहा हूँ नॉन नेगेटिव रियल नंबर? क्योंकि अब इसकी वो फाइनाइटनेस मैंने एस्टैब्लिश कर दी ना. सो इट्स अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर एक्चुअली. मैं ये लिख रहा हूँ 10. दिस लिटिल ए इट बिलोंग्स टू ज़ीरो इन्फिनिटी. इट्स लेस देन इन्फिनिटी, इट कैनॉट बी लेस देन ज़ीरो. सो इट बिलोंग्स टू ज़ीरो इन्फिनिटी. फुल स्टॉप. अब इसके बाद आप क्या करिए, अगेन फॉर ईच n in the set of natural numbers, since a minus 1 by n, now that a is a finite real number because it belongs to 0 infinity, so if you subtract 1 by n, which is a positive quantity, from a, the resulting quantity, it will be strictly less than a. Now what is a? A is the sup. So sup means least upper bound. Now that a minus 1 by n is less than a, so a minus 1 by n जो है वो upper bound नहीं हो सकता. किसका upper bound नहीं हो सकता? जिसका sup a है. That means ये quantity जो है a minus 1 by n, it cannot be an upper bound for script a. तो क्या होगा? एक एलिमेंट होगा स्क्रिप्ट a में, और जो अगर a में है एलिमेंट होगा, दिस एक्चुअली अमाउंट्स टू सेइंग दैट देयर इज एन एलिमेंट इन फैंसी f. मैं यही अब लिख रहा हूँ. वी कैन फाइंड an in fancy f such that mu of an will be greater than a minus 1 by n. और चूंकि म्यू ऑफ ए एन जो है वो स्क्रिप्ट ए से आ रहा है, और स्क्रिप्ट ए का सुप लिटिल ए है, सो देयरफॉर दिस विल बी लेस और इक्वल टू लिटिल ए, एंड दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल द एन्स. मतलब यही चीज़ आप बेसिकली कर सकते हैं फॉर ऑल द एन्स इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है. अब इसमें आप क्या करेंगे? यू लेट दिस एन गो टू इन्फिनिटी. लेटिंग n go to infinity, we get what? बताइए. We get when n goes to infinity, this will go to a.
ये this is free of n, so it will remain A. So by squeeze principle, this will go to A as n goes infinity. So basically we'll get this. We get limit n goes infinity mu of an is equal to A. ठीक है, बाय स्क्वीज प्रिंसिपल. अब ये जो लिमिट n गोस इन्फिनिटी म्यू ऑफ ए एन है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ. दिस आई कैन राइट एज म्यू ऑफ यूनियन n runs from 1 to infinity a n. ठीक है. नाउ व्हाई दिस इज ट्रू, यहाँ मैं कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ. हाउ कैन आई राइट दिस लिमिट एज दिस. दिस इज द आउटर लिमिटिंग थियरम फॉर साइनड मेजर्स. ठीक है. सो ये किया जा सकता है. यू कॉल, आप कोई लेबल इसको दीजिए, आप कॉल इट स्टार. ओके. Therefore, if A be equal to the union of these ANs, if A be equal to the union of these ANs, then now we are going towards the conclusion now. Then this A is a positive set. Why? Because ANs, they are coming from fancy F. Fancy F means they are positive sets, and A being countable union of these positive sets is a positive set. So A is a positive set. So A is greater or equal to 0. A is greater or equal to 0, and mu of A will be equal to little a. Now what is little a? Little a in a way is the sup of signed measures of positive sets, because little a is sup of script a. Script a is the set of all possible signed measures of positive sets. So basically A जो है ना, it is the largest signed measure which we can get by considering the positive sets. ठीक है ना. और मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ A जो मैंने इस तरह से क्रिएट किया, it is a positive set, and इसका जो signed measure है, signed mu measure, it's A, which is the sup of all the signed measures of positive sets. So in this sense, this capital A is in a way the largest positive set present in X. इस सेंस में ना मैं कह सकता हूँ that this capital A is in a way the largest positive set contained in X, because इसका जो mu है that's equal to little a, and little a is the sup of signed measures of all the positive sets. So this is A. हमें दिखाना है कि दिस हैज़ अ एक्स हैज़ अ हार्न डिकम्पोजिशन, और हार्न डिकम्पोजिशन के लिए वी मस्ट बी एबल टू कम अप विद एन ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी. ए तो मिल गया हमें, ए इज द यूनियन ऑफ दीज ए एंस. ठीक है. यहाँ जो मैं ये आपको कह रहा हूँ ना, दैट म्यू ऑफ
कैपिटल ए इज़ लिटिल ए, मैं इसमें ये स्टार इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज आपने यहाँ देखा ना दिस इज़ एक्चुअली ए, तो दिस इज़ म्यू ऑफ ए और आप देख रहे हैं इट्स इक्वल टू लिटिल ए। तो ये असल में ना इसको ऑब्टेन करने के लिए वी हैव एक्चुअली यूज्ड स्टार, और स्टार में हमने आउटर लिमिटिंग थ्योरम का इस्तेमाल किया, तो यहाँ आउटर लिमिटिंग थ्योरम इस्तेमाल होती है ये कंक्लूड करने के लिए दैट म्यू ऑफ कैपिटल ए इज लिटिल ए। अब इसके बाद आप क्या करिए, अब हमें बी चाहिए, सो लेट बी, आप गेस कर सकते हैं व्हाट शुड बी बी, लेट बी बी इक्वल x minus a, so b is going to be the complement of a, तभी तो ये डिसजॉइंट होंगे ना a और b, और तभी तो इनका यूनियन x आएगा, so b has to be the complement, let b equal to x minus a, then we claim that this b is a negative set. This is my claim. My claim is that this b, यहाँ full stop ही आप करिएगा, let b be equal to x minus a which is actually complement of a, फिर यहाँ आप ये कैपिटल लिखेंगे, we claim that, then नहीं लिखेंगे, full stop के बाद we claim that b is a negative set with respect to mu। अब ऐसा क्यों? इसको भी हम कंट्रडिक्शन से ही एस्टैब्लिश करेंगे। फॉर इफ दिस इज नॉट द केस, then what we can do, we can find a measurable मेरा claim है कि that it's a negative set. Negative set means signed mu measure of every measurable portion of b is less than or equal to 0. वही होता ना नेगेटिव सेट। so this is my claim। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका जो इसके हर एक मेजरेबल पोर्शन का अगर आप म्यू साइनड मेजर लेंगे, इट विल बी समथिंग विच इज़ लेस और इक्वल टू 0। अब अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर इसका एक मेजरेबल पोर्शन होगा, बी का एक मेजरेबल पोर्शन होगा विच हैज़ पॉजिटिव साइनड मेजर। मैं वही लिख रहा हूँ। फॉर इफ दिस इज़ नॉट द केस देन वी कैन फाइंड an E in sigma algebra with E contained in B, means E is a measurable portion of B and mu of E greater than 0। तो ये किया जा सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं, we can find an E। Now what is this E? E is coming from sigma algebra और इसका measure signed mu measure, it is positive। Now we will use yesterday's result। हमने देखा कल ऐसे केसेस में जिस सेट का साइनड मेजर पॉजिटिव होता है उस सेट के अंदर एक पॉजिटिव सेट रहता है। सो आई कैन फाइंड अ पॉजिटिव सेट इनसाइड दिस E। मैं वही रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाय अ प्रीवियस रिजल्ट we can find a D कहाँ, present inside E, मतलब contained in E with D positive, मतलब D will be a positive set with respect to mu and इसका जो mu signed measure है D का, it will be greater than 0। ये किया जा सकता है। This is the yesterday's result।
अब यहाँ आप एक पिक्चर ना ड्रा करिए. Suppose this is x. Let's suppose this is a. What is b? b, we know that it is x minus a, so it is actually the complement of a. तो ये जो बाहर वाली टेरिटरी है, this is b, the complement of a. This is b. Now d कहाँ रहता है? d lives in e. Where is e? e is a subset of b. तो इस b के अंदर एक सबसेट है e. मान लीजिए this is e. और इस e के अंदर d रहता है. ऐसे suppose this is your d. Sorry. This is d. फिर से ठीक से नहीं बन रहा है. ये b है. b के अंदर e और e के अंदर हमारा d रहता है. This is e. And inside this e there is a territory which is d. मैं ये पिक्चर थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूँ क्योंकि हमारी जो आर्ग्यूमेंट है वो पूरी इस पिक्चर पे ही बेस्ड है. अब x, this suppose is a, और इस a का की जो बाहर वाली दुनिया है that is b. ठीक. और इस b के अंदर जो है वो e रहता है. और this is e, और e के अंदर जो है वो d रहता है. This territory suppose is d. तो ये पिक्चर का आप इस्तेमाल करेंगे आप. Now what is this d? I know that d is a positive set. If इसके बाद मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ. तो ये किया जा सकता है अगर b जो है, if b is not a negative set, तो इस b के अंदर एक सेट होगा which is measurable, मतलब it comes from sigma algebra, और उसका मेजर पॉजिटिव होगा. और कल वाला रिजल्ट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो हम फिर देख सकते हैं कि उस सेट के अंदर एक सेट होगा d which is a positive set. तो पिक्चर कुल मिला के फिर ऐसी बनेगी. अब हम क्या करेंगे? I'll create a set f. Let capital F be equal, और ये कैपिटल F में क्या लूँगा? इसमें एक तो मैं A लूँगा और इसको मैं अटैच करूँगा D. सो कैपिटल F विल बी A यूनियन D. देन अगर ऐसा, इफ कैपिटल F इज दिस, देन कैपिटल F इज अ पॉजिटिव सेट. क्यों? बिकॉज A एंड D दे आर बोथ पॉजिटिव सेट्स. ठीक. एक और चीज़, अगर आप इसका म्यू लेंगे कैपिटल F का, चूंकि ये पॉजिटिव सेट है, सो देयरफॉर इट विल बी लेस और इक्वल टू A. है या नहीं? बिकॉज A आफ्टर ऑल इज द सुप ऑफ ऑल द म्यू साइनड मेजर्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव सेट्स. So mu of f will be less or equal to A. Now what is mu of f? We can compute this. F is the union of A and D. A and D are coming from sigma algebra and they are disjoint also. वो पिक्चर से आप देख सकते हैं. They are disjoint also. So I can use additivity of mu. So this I can write as mu of A plus mu of D. What is mu of A? Mu of A, I know that it is little a. And mu of D, वो ऐसे लिखेंगे. So mu of A plus mu of D is less or equal to mu of A. अब यहाँ क्या होगा? mu of A cancel होगा. Because ये दोनों साइड से आ रहा है ना इनइक्वालिटी के. और positive set, and therefore
या ऐसे लिखेंगे then mu of then F is a positive set and F is a positive set and this will be true. Full stop. या cancellation जब आप करेंगे so it gives this. And cancellation is permissible because we have established that this A basically मैं यहाँ A को subtract कर रहा हूँ and subtraction is permissible because A is a finite real number. It's a non-negative real number. Now क्या मिलेगा आप यहाँ से cancellation करके this gives A cancel so आपको मिलेगा mu of D is less or equal to 0, which is a contradiction, which contradicts the fact that mu of D is positive. जब मैंने ये D को यहाँ इंट्रोड्यूस किया था, हमने वो इंट्रोड्यूस किया था यूजिंग द प्रीवियस रिजल्ट एंड द प्रीवियस रिजल्ट गारंटीज दैट म्यू ऑफ D इज पॉजिटिव, और यहाँ देख रहे हैं म्यू ऑफ D इज लेस और इक्वल टू 0. दीज आर कंट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है. ठीक, सो इट्स अ कंट्राडिक्शन दिस स्टेटमेंट म्यू ऑफ D लेस और इक्वल टू 0. Okay, so we get a contradiction. The contradiction क्यों आई? Because we went against the claim. So if you go against the claim that B is a negative set, you'll get a contradiction. So B is indeed a negative set. This establishes our claim that B is a negative set less or equal to 0 with respect to mu. Full stop. Now since A and B are disjoint and their union is X, इसलिए because B जो है that is actually A complement, and is actually because of this that A union B is X. So therefore the pair A comma B is actually a Hahn decomposition. मैं ये लिखने जा रहा हूँ. Consequently the ordered pair A comma B is a Hahn decomposition. It's a Hahn decomposition of X with respect to the sign and measure mu. That proves the existence of a Hahn decomposition. So given a sign and measure mu, you can always come up with a Hahn decomposition. So this settles the first part of the theorem, the existence part. X has a Hahn decomposition A comma B. मैंने A भी आपको create करके दिया और B भी create करके दिया. ठीक है, इसका ये जो प्रूफ है इन अ वे इट्स अ कंस्ट्रक्टिव प्रूफ. आपको ये थियरम का प्रूफ ही बताता है कि व्हाट इज A एंड व्हाट इज B. ठीक है, सो दिस सेटल्स द एग्जिस्टेंस पार्ट. नाउ वी कम टू द अदर पार्ट्स. नाउ इफ मैं कोई और कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ आप. नाउ इफ A1 comma B A1 comma B1 be some other Hahn decomposition of X with respect to mu, then in view of the facts
जो मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर आप इसे लेंगे a माइनस a1, what is a minus a1? I can write this as a intersected with a1 complement. ये ठीक है. अब a1 complement को आप देखिए, अब क्या रहा है कि a1, b1 is a Hahn decomposition. a1, b1 is a Hahn decomposition. It means this. It means a1 intersected with b1 is phi, and a1 union b1 is x. Okay. And this means what? This means actually a1 is b1 complement and b1 is a1 complement, है ना? Because they are disjoint and their union is x. So a1 is, basically they must be complements of each other. Yeah. a1 is b1 complement and b1 is a1 complement. What is this? This is a intersected with a1 complement. I should say a intersected with a1 complement. a1 complement is b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे. It's b1, sorry. So it is a intersected with b1 because a1 complement is b1, and this is clearly contained in b1 because it's a part of b1. ठीक. इसी तरह से अगर आप वो दूसरी डिफरेंस लेंगे विच इज a1 माइनस a, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं. दिस इज a1 intersected with a complement. A complement is b, so this is a1 intersected with b, and this is contained in b. B1 and B, they are the second components in the Hahn decomposition, so that means they are negative sets. So that means these are measurable portions of negative sets. So इनका जो mu signed measure है, it will be less or equal to 0. In view of the facts, this is contained in this is contained in this, it follows mu of a minus a1, because it's a portion of b1, b1 is a negative set, it's a measurable portion of b1, b1 is a negative set, so this will be less or equal to 0. And यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा mu of a1 minus a will be less or equal to 0. Full stop. Also, फिर से आप ये देखें, since a minus a1 जो है, this is contained in a, because आप a से point से move कर रहे हैं, so it will be a subset of a, and a1 minus a is contained in a1. A and a1 are positive sets. तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? इससे पहले हमने ये इस्तेमाल किया था, b1 and b are negative sets. They are negative sets means these signed measures will be less or equal to 0. अब हम क्या देख रहे हैं? वही सेट वही है, a minus a1 और a1 minus a. Now this time around हम इनको देख रहे हैं as portions of a and a1. a and a1 are positive sets. तो इनके जो signed measures है, they will be greater or equal to 0 also. It follows mu of a minus a1 is greater or equal to 0, and mu of a1
minus a is greater or equal to 0. ठीक, ऊपर आपने देखा म्यू ऑफ a minus a1 is greater or equal to 0, नीचे देख रहा है it is सॉरी ऊपर आपने देखा it is less or equal to 0 और नीचे देख रहा है कि that it is greater or equal to 0, so कुल मिला के it's actually equal to 0. Same is the case with this, यहाँ less or equal to 0, नीचे greater or equal to 0, so again we have equality. So consequently mu of a minus a1 is equal to 0 and mu of a1 minus a is equal to 0. Thus, mu of a minus a1 union a1 minus a, which is actually the symmetric difference of a and a1, by using the additivity of mu, because these two sets are sigma algebra members and they are disjoint, so I can use additivity. So this will be mu of a minus a1 plus mu of a1 minus a, और आपने ऊपर देखा कि ये दोनों 0 है, so this is 0 plus 0 which is equal to 0. This proves what? This proves, इससे ये prove हो जाता है. So we have proved this. Now similarly you can prove this. मैं ये details में नहीं जा रहा हूँ, I leave this to you. एक सिमेट्रिक डिफरेंस का मैंने दिखाया आपको, दूसरी का आप खुद करेंगे, वो भी ऐसे ही है बिल्कुल. इसका रीज़न मैं आपको वही आप बता सकता हूँ कि वाई दिस मेजर, द साइनड मेजर ऑफ द सिमेट्रिक डिफरेंस इज 0. इसका रीज़न ये है, ये जो डिफरेंस है ना, b माइनस b1, इट्स अ पार्ट ऑफ b, है ना, एंड माइनस b1 मीन्स एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ b1 complement. b1 complement इज a1, so it's a part of b as well as a1. b जो है it's a negative set, a1 is a positive set, तो इसका जो साइनड मेजर है, म्यू मेजर जो है इसका b minus b1 का, ये it will be less or equal to 0 as well as greater or equal to 0, so that means it will be 0. and same is the case with this, इसका भी जो ये म्यू है वो 0 होगा, और by using the additivity of mu you can see that mu of the union is 0, means the mu of the symmetric difference is 0. So now we are not going through the details, मैं simply ऐसे लिखूंगा. Similarly we can show mu of b minus b1 union b1 minus b is equal to 0. ठीक है. Now we come to the third part जो ऊपर हम statement में देख रहे हैं. अब आपको ये दिखाऊंगा, mu of a intersected with e is same as mu of a1 intersected with e. वो देखिएगा कैसे हम करेंगे. Next, comma, let e in capital sigma be arbitrary. फिर क्या होगा अगर ऐसा है, then mu of a intersected with e हम इसे लेंगे. अब इसको देखिएगा कि मैं इसको कैसे लिखूंगा. I'll write this as mu of
मुझे यहाँ किसी तरह से ना वो A1 को इन्वॉल्व करना है. वो कैसे करूँगा मैं? I'll write this as मैं ये A को देखिए कैसे लिखूँगा. I'll write this A as A intersected with A1 union A intersected with A1 complement. अब देखिए this will be A because A common आएगा, so it will be A1 union A1 complement, that is X. So this is A intersected with X, which is A. So this is actually A, and then we have intersected with E. ठीक है ये. Now this is equal to what? This is equal to mu of, you distribute this intersection over the union, so therefore it will be mu of A intersected with A1 intersected with E, then union A intersected with A1 complement. That means actually it is A minus A1 intersected with E. ठीक है, या पहले आप उसको वैसे ही लिख सकते हैं अगर आप मैं यहाँ एडिटिविटी इस्तेमाल करना चाहता हूँ. एडिटिविटी के लिए जब A1 कॉम्प्लीमेंट आपको दिखेगा तो आपको थोड़ा ना ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी. तो फिलहाल A1 कॉम्प्लीमेंट ही रखिए. A1 कॉम्प्लीमेंट. नाउ दिस इज पार्ट ऑफ A1 बिकॉज इंटरसेक्शन में A1 आ रहा है, एंड दिस सेट इज पार्ट ऑफ A1 कॉम्प्लीमेंट. This set is part of A1 and this is part of A1 complement. A1 and A1 complement are disjoint, so that means these parts are disjoint. So I can use additivity. ये सिग्मा अलजेब्रा से तो आ ही रहा है, वो तो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं because A and A1 and E, they are all coming from sigma algebra. So I can directly use the additivity. So therefore this will be mu of A intersected with A1 intersected with E. ठीक है. Then we have this, we have additivity इस्तेमाल करके this will be now plus. Plus mu of A intersected with A1. अब वो intersected with A1 को मैं वैसे लिख सकता हूँ इस तरह से अभी मैंने लिखा था इसको. यार चलिए ऐसे लिखेंगे, हाँ, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा ना ये आसान होगा देखना. Now this is intersected with A1 complement. A1 complement, I know that it is actually B1. So this is actually A intersected with B1. A1 complement की जगह B1 लिख सकते हैं, and then intersected with E. ठीक है. अब यहाँ ये इस सेट को देखिए. दिस इज पार्ट ऑफ A बिकॉज इसमें इंटरसेक्शन में A है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ B1 ऑल्सो बिकॉज इंटरसेक्शन में B1 भी है. सो ये A का भी पार्ट है और B1 का भी पार्ट है. A इज अ पॉजिटिव सेट. ठीक, A इज अ पॉजिटिव सेट और ये A का पार्ट है, तो मीन्स इट विल, इसका जो म्यू है इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0. सो दिस म्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 जब आप इसको देखेंगे एज अ पार्ट ऑफ A. And when you see this as a part of B1, B1 is a negative set, so therefore it will be also less or equal to 0. Greater or equal to 0 as well as less or equal to 0 means actually this thing is 0. So I can drop this. So I can write this simply as, दूसरी term को मैं छोड़ सकता हूँ because it's 0. So this is simply mu of A intersected with A1 intersected with E. ठीक है. इसको कोई लेबल दीजिएगा, कॉल इट फर्स्ट.
लाइकवाइज अगर आप ये लेंगे, यहाँ आपने लिया था म्यू ऑफ ए इंटरसेक्टेड विद ई, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए इंटरसेक्टेड विद ई, इफ यू टेक दिस, इफ यू टेक म्यू ऑफ A1 इंटरसेक्टेड विद ई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू ऑफ, मैं अब जल्दी जल्दी लिखूंगा, A1 को मैं लिखूंगा एज A1 इंटरसेक्टेड विद A यूनियन A1 इंटरसेक्टेड विद A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो ये आ गया आपका A1 एंड देन वी हैव इंटरसेक्टेड विद A, तो ये आ गया म्यू ऑफ A1 इंटरसेक्टेड विद E। अगेन जैसे ऐसे अभी किया था, विल डिस्ट्रीब्यूट द इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन एंड देन आई विल यूज एडिटिविटी, सो देयरफॉर इट विल बी म्यू ऑफ, मैं ये दोनों चीज़ें हैं ना एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंटरसेक्शन ओवर द यूनियन, आई एम यूजिंग एंड देन आई एम यूजिंग एडिटिविटी, सो इवेंचुअली आई विल गेट दिस म्यू ऑफ A1 intersected with A intersected with E and then plus mu of A1 intersected with A complement. A complement is B. ठीक, then intersected with E. फिर से आप इसको देखिए, इंटरसेक्शन में A1 आ रहा है, सो इट्स पार्ट ऑफ A1, A1 इज अ पॉजिटिव सेट, सो इसका जो म्यू है इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन में B भी आ रहा है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ B, B इज अ नेगेटिव सेट, तो इसका जो म्यू है इट विल बी less or equal to 0. So this mu is greater or equal to 0 as well as less or equal to 0. So again it's equal to 0. So again I can drop this term. So this is simply mu of A1 intersected with A intersected with E. ठीक है? You call it second. Now you combine first and second. First and second जो है, अगर आप इनका RHS देखेंगे राइट हैंड साइड, वो सेम है, सो LHS भी सेम होना चाहिए। सो क्या मिलेगा आपको? फिर आपको मिलेगा म्यू ऑफ A इंटरसेक्टेड E इज सेम एज म्यू ऑफ A1 इंटरसेक्टेड विद E। combining first and second, we get mu of A intersected with E is same as mu of A1 intersected with E. Now similarly you can show the other part also, because वो ऐसा ही है ना, तो उसको मैं नहीं करूँगा और राइट सिमिलरली। और यहाँ जो E आपने देखा था, दिस वाज चोजन आर्बिट्रली, सो दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल द E's इन सिग्मा अलजेब्रा। नाउ सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही वी कैन शो दैट mu of B intersected with E is same as mu of B1 intersected with E, and this is true for all the E's in capital sigma. बिल्कुल ऐसे ही आप ये भी कर सकते हैं। ठीक, आपने जो यहाँ लॉजिक इस्तेमाल किया बिल्कुल ऐसे ही, आपने पहले A लिया था और A के साथ आपने फिर A1 इन्वॉल्व किया। अब नीचे आप क्या करेंगे, आपको यहाँ ना इसके लिए आपको लेना है B इंटरसेक्टेड विद E, तो B के साथ आप B1 इन्वॉल्व करेंगे और फिर ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, इवेंचुअली आपको मिलेगा कि दैट these two are equal. Mu of B intersected with E is same as mu of B1 intersected with E, and that proves the theorem completely. This is the Hahn decomposition theorem. ठीक, अब इसकी एक कॉन्सिक्वेंस जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, दिस इज़ द थ्योरम। अब इसकी कॉन्सिक्वेंस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अब मैंने आपको दिखाया, इसको आप एज अ रिमार्क रिकॉर्ड करेंगे। इफ x be non-empty,
X be non-empty, sigma be a sigma algebra of subsets of X and mu from capital sigma into minus infinity plus infinity be a signed measure full stop. या अब लेट से स्टार्ट करेंगे ना if की जगह. बिकॉज आइडियली इफ़ के बाद देन आना चाहिए, बट यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी मेरा यहाँ ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, सो आई रिप्लेस दिस इफ बाय लेट. लेट एक्स बी नॉन एम्पटी, दिस बी अ सिग्मा algebra of subsets of x and mu from capital sigma to minus infinity plus infinity be a signed measure. ठीक. Now we have already established the existence of Hahn decomposition. मैं यहाँ वही अब इसमें इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. If a comma b be a Hahn decomposition, be a Hahn decomposition of x with respect to the signed measure mu, then मैं यहाँ दो फंक्शंस डिफाइन करना चाहता हूँ. देन म्यू प्लस एक फंक्शन मेरा जो होगा, मैं दो फंक्शंस यहाँ ना इनिशियली डिफाइन करना चाहता हूँ. जो पहला फंक्शन है उसको मैं डिनोट करूँगा बाय म्यू प्लस फ्रॉम, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली डिफाइन करूँगा, तो इसके लिए मैं ऐसे लिखूँगा. देन मैं दोनों फंक्शंस जो है ना, मैं दो फंक्शंस डिफाइन करना चाहता हूँ, दो सेट फंक्शंस, और वो जो दो फंक्शंस हैं उनके लिए जो मेरे सिंबल्स रहेंगे वो रहेंगे म्यू प्लस एंड म्यू माइनस, और मैं ये दोनों फंक्शंस को साइमल्टेनियसली यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ. म्यू प्लस कॉमा म्यू माइनस फ्रॉम कैपिटल सिग्मा इनटू 0 infinity defined by this rule. जो म्यू प्लस है वो ऐसे काम करेगा. म्यू प्लस when evaluated at e it's equal to mu of e intersected with a, and this is true for all the e's in कैपिटल सिग्मा. और जो म्यू माइनस है उसके लिए जो काम करने का तरीका है वो ये रहेगा. म्यू माइनस जो है, म्यू माइनस व्हेन इवैल्यूएटेड एट ई, दिस विल बी डिफाइंड एज म्यू ऑफ ई intersected with b, but since b is a negative set, so ideally this mu will be less or equal to 0. लेकिन मेरा क्लेम है कि म्यू माइनस एक्स वैल्यूज इन 0 इन्फिनिटी, सो फॉर दैट मुझे यहाँ एक मॉडिफिकेशन, एक करेक्शन चाहिए, एक करेक्शन फैक्टर चाहिए, एंड दैट वुड बी -1. दिस इज माइनस टाइम इज दिस फॉर ऑल इज इन. दिस इज हाउ these two functions are working. This is the action of these two functions, mu plus and mu minus. Mu plus works like this and mu minus works like this. और ये हमने पहले ही देखा है, चूंकि अब यहाँ जो a है आपका, ये हार्न डिकम्पोजिशन का पहला कंपोनेंट है, मीन्स इट्स अ पॉजिटिव सेट. तो इस तरह से जब आप फंक्शन करते हैं, वी नो दैट इट्स अ मेजर, सो म्यू प्लस इज अ मेजर. और ये भी मैंने वो जो दूसरी थ्योरम वहाँ तब लिखी थी, बाय दैट थ्योरम दिस इज ऑल्सो मेजर. सो म्यू प्लस एंड म्यू माइनस, दे आर बोथ मेजर्स. Then mu plus comma mu minus defined by this and this are measures. Are measures on capital sigma. और इन दो measures में से एक measure necessarily finite होगा. Are measures on capital sigma with one
of them finite. बता सकते हैं आप क्यों? मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये मेजर्स है म्यू प्लस एंड म्यू माइनस, दे विल बी मेजर्स, वो हमने पहले ही ना इंश्योर किया है, वो थ्योरम्स में पहले ही वो चीज़ आपके साथ ना वो ये चीज़ सेटल पहले ही करी है, दे आर मेजर्स. मैं आपसे कह रहा हूँ कि वन ऑफ दीज मेजर्स इज नेसेसरीली फाइनाइट, मतलब दोनों मेजर्स इनफिनाइट मेजर्स नहीं हो सकते. अगर होंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी? लेट्स सपोज बोथ द मेजर्स आर फाइनाइट इनफिनाइट. मेरी असर्शन है कि वन ऑफ देम इज फाइनाइट. अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? दोनों फिर इनफिनाइट मेजर्स होंगे. सो दैट मीन्स म्यू प्लस एट एक्स विल बी इन्फिनिटी एंड म्यू माइनस एट एक्स विल बी इन्फिनिटी. नाउ व्हाट इज म्यू प्लस एट एक्स? वो आप म्यू प्लस की डिस्क्रिप्शन से जान सकते हैं. म्यू प्लस एट एक्स इज, आपको ई की जगह x रखना है, so it will be mu of x intersected with a, so therefore it will be actually mu of a. So mu plus of x is infinity, it actually implies mu of a, because mu plus जो है ना, it is exactly equal to mu of a, so this means mu of a is infinity. Now what is mu minus of x? Well, mu minus of x we know that is actually, वो आप mu minus की description से देख के, mu minus of e is this, so e की जगह अगर x लिखेंगे it will be minus times mu of x intersected with b. X intersected with b is b, so therefore it will be actually minus times mu of b. So mu minus of x equal to infinity means actually minus times mu of b is equal to infinity, and that means mu of b is equal to minus infinity, because if minus times mu b is infinity, it means mu b is actually minus infinity. So that means mu of a is infinity and mu of b is minus infinity, which is not possible. म्यू जो है इट्स अ साइनड मेजर, ये दोनों इन्फिनिटीज अस्यूम नहीं कर सकता. तो बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर ये दोनों अगर इन्फिनिट मेजर्स होंगे तो फिर म्यू जो है वो दोनों इन्फिनिटीज अस्यूम करेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो वन ऑफ देम हैज़ टू बी फाइनाइट. One of them is finite. ठीक है? One of them is finite. अब आप क्या करें? You take the difference of these two measures. Notice that mu plus of e minus mu minus of e, अगर आप ये डिफरेंस लेंगे और ये जो e है यहाँ पर, ये हम विल assume that this e is arbitrary. Notice, और मैं यहाँ लिखूँगा ये. Notice that for each e in capital sigma, mu plus e minus mu minus e, what will be this? Well, mu plus जो है that is mu plus of e. It is mu of e intersected with a, and this is minus times mu minus e. Mu minus में minus sign आता है और यहाँ minus already है, so it will be minus minus plus, so it will be plus mu of e intersected with b. Now this is part of a, this is part of b. A and b are disjoint, so these parts are disjoint and they are also coming from sigma algebra, so I can use additivity in the reverse direction. So I can write this as mu of e intersected with a union e intersected with b. E common आएगा, so therefore it will be mu of
E intersected with A union B. Now A comma B is a Hahn decomposition, so A union B will be X. So this is E intersected with X. E intersected with X is E. So this is actually mu of E. This is equal to mu of E. तो क्या दिखा रहा हूँ मैं आपको दिखा रहा हूँ for each E in capital sigma, mu of E is mu plus of E minus mu minus of E. That means mu is the difference of mu plus and mu minus. Thus, this mu is equal to mu plus minus mu is mu plus minus mu minus. ठीक है, तो mu is equal to this, ये आप ऊपर से देख सकते हैं. Now what does this mean? यहाँ जो equation है, first I have established this equation. ठीक है, इसका जो left side है it's mu. What is mu? Mu is a signed measure. और इसका जो right side है it is difference of two measures because mu plus and mu minus are measures. So basically मैं आपको दिखा रहा हूँ a signed measure can be written as difference of two measures, और ये दो measures में हमें पता है कि एक measure necessarily finite है, वो मैंने दिखाया आपको, otherwise we'll have a problem. One of them is finite. So the moral of the story is every signed measure can be written as difference of measures where one of them is finite. This is the converse of that remark जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस करी थी. कल मैंने आपको बताया था difference of two measures where one of them is finite is a signed measure. इसका converse भी true होता है. That means every signed measure can be written as difference of two measures where one of them is finite, and this is the justification. यहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हाँ असल में ऐसा होता है. ठीक है, mu is equal to the difference, and this actually now establishes that a signed measure can be written as, rather I can say that every signed measure, because mu कोई भी signed measure हो सकता है ना, so every signed measure can be written as difference of two measures where one of them is finite. And by the way, this decomposition of mu जो आप यहाँ देख रहे हैं, this is called the Jordan's decomposition. This is known as the Jordan's decomposition. Of a signed measure. और ये जो mu plus और mu minus आप इस decomposition में देख रहे हैं, they are called the positive and the negative variations. Mu plus is called the positive variation. Positive variation of mu, and mu minus, this is known as the negative variation. It's known as the negative variation of mu. ठीक है, और एक और चीज़ है, हाँ मैं अभी अब कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ. एक और चीज़, जिस तरह से हमें म्यू प्लस और म्यू माइनस ना क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, आपको ये इम्प्रेशन लग रहा होगा कि आपको ये एक इम्प्रेशन शायद मिल रहा होगा कि दैट म्यू प्लस एंड म्यू माइनस दे डिपेंड अपॉन दी हार्न डिकम्पोजिशन. बिकॉज लग तो वैसे ही रहा है ना, बिकॉज म्यू प्लस की डिस्क्रिप्शन में आप ए इस्तेमाल कर रहे हैं, ए इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट इन दी हार्न डिकम्पोजिशन, और म्यू माइनस की डिस्क्रिप्शन में आप बी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो बी है इट्स द सेकंड कंपोनेंट इन द. सो यहाँ से आपको मतलब एक इम्प्रेशन जा रहा होगा कि these two measures, mu plus and mu minus, they are dependent upon this Hahn decomposition. That means if we change the Hahn decomposition, you might suspect that this mu plus and this mu minus, they might change. But ऐसा नहीं है. इसका रीज़न आप मुझे बता सकते हैं कि why these measures mu plus and mu minus are independent of the choice of the Hahn decomposition?
उसका रीज़न है हर्न डिकम्पोजिशन थ्योरम, वो हमने उसी में पहले ही ना ये चीज़ सेटल करी है। आपको वहाँ ना ये चीज़ हमने ये पहले ही वहाँ देखी है, ये देखिए। If AB is a Hahn decomposition with respect to mu, and if A1 B1 be some other Hahn decomposition, then mu of A intersected with E is same as mu of A1 intersected with E. तो मतलब कहने का मतलब है म्यू प्लस के लिए चाहे आप ये वाली हार्न डिकम्पोजिशन इस्तेमाल करें या ये वाली हार्न डिकम्पोजिशन, ये वाली हार्न डिकम्पोजिशन इस्तेमाल करने का मतलब है कि आप ए इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये वाली हार्न डिकम्पोजिशन इस्तेमाल करने का मतलब होगा कि आप A1 इस्तेमाल कर रहे हैं, और दोनों सूरतों में आपको सेम आंसर मिलेगा, बिकॉज म्यू ऑफ A intersected with E is same as mu of A1 intersected with E. So मतलब mu1 क्रिएट करने के लिए आप AB हार्न डिकम्पोजिशन इस्तेमाल करें या A1 B1 इस्तेमाल करें, एक ही बात है, आपको कोई डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. सो द पॉजिटिव वेरिएशन जिसको हम mu1 जो है, इट्स एक्चुअली पॉजिटिव वेरिएशन ऑफ द साइनड मेजर. पॉजिटिव वेरिएशन इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ द हार्न डिकम्पोजिशन. हालांकि इसकी डिस्क्रिप्शन में हार्न डिकम्पोजिशन का इस्तेमाल होता है, बट द चॉइस ऑफ द हार्न डिकम्पोजिशन इट इज इमटेरियल हियर. Even if you change the Hahn decomposition, if you go from one Hahn decomposition to another Hahn decomposition, ये जो functions है mu plus और mu minus, they are not going to change. They are independent of the choice of the Hahn decomposition. This is point number 1. और जो यहाँ सबसे इसके बाद जो ना एक और चीज जो अच्छी चीज़ है यहाँ, वो ये है कि you can create another measure also. ये मैंने पहले ही आपको दिखाया, sum of two measures is a measure. Now mu plus and mu minus, they are measures. So if you take their sum, you'll get a measure. ठीक है. So mu plus mu minus अगर आप लेंगे, because they are measures and sum of two measures is a measure, so this will be a measure. और ये measure को हम denote करेंगे by mod mu. Mod mu actually denotes the measure which is defined as positive variation plus the negative variation. It will be a measure, and this measure is called the total variation measure. This is mu plus is called the positive variation. Mu minus is called the negative variation. And this sum of positive and negative variation is called the total variation. Total variation of mu. This is positive variation of mu, and this is negative variation of mu. So positive variation of a Hahn measure, negative variation of a Hahn measure, and total variation of a Hahn measure, they are all measures. और उनको उसी साइनड मेजर से ही क्रिएट किया जाता है. सो गिवन अ साइनड मेजर यू कैन क्रिएट 3 मेजर्स एक्चुअली: पॉजिटिव वेरिएशन, नेगेटिव वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन. ठीक है, ये याद रखिएगा. गिवन अ साइनड मेजर यू कैन क्रिएट 3 मेजर्स: पॉजिटिव वेरिएशन, नेगेटिव वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन. इन जनरल मैं कह रहा हूँ. एंड द साइनड मेजर विल बी रिलेटेड टू दीज measures. कैसे? Because if you take the difference of the positive and the negative measure, it will be the signed measure. मैंने ऊपर आपको दिखाया. एक और चीज मुझे बताइए, what happens if mu is itself a measure? If mu is a measure, what will be its Hahn decomposition? If mu is a measure, then x comma phi will be
a Hahn decomposition of x with respect to mu. और म्यू प्लस के लिए आप कोई भी हार्न डिकम्पोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं. चॉइस ऑफ द हार्न डिकम्पोजिशन इज इमेटीरियल if you are interested in creating positive variation or if you are interested in computing the positive variation. अब हमारे पास एक हार्न डिकम्पोजिशन अवेलेबल है, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे to create the positive variation for mu, to create the or to compute the positive variation of mu. So what will be mu plus in this case? So mu plus, when evaluated at E, by definition this is equal to mu of E intersected with the first component in the Hahn decomposition, which is x here. So it will be mu of E intersected with x. Mu of E intersected with x is actually mu of E. So, and this will be true for all the E's in sigma algebra. So that means mu plus is same as mu. So if mu is a measure, then the positive variation of mu is same as mu. So positive variation of a measure is actually same as the measure. What about the negative variation? What about the negative variation? Negative variation is mu minus. और वो कैसे कंप्यूट होगी, उसके लिए आपको सेकंड कंपोनेंट इस्तेमाल करना है हार्न डिकम्पोजिशन का. सो इट विल बी डिफाइंड एज म्यू माइनस एट ई. इट विल बी डिफाइंड एज म्यू ऑफ ई intersected with the second component. What is the second component there? The second component there is phi, empty set. So therefore it will be mu of E intersected with phi, empty set. E intersected with phi is phi. So therefore it will be mu of phi, and mu of phi is 0. And this will be 0 for all the E's. So that means what? That means negative variation of mu is equal to 0. So negative variation of a measure is 0. And this is reasonable. We expect this because it's a measure. इसमें कोई negative values नहीं है. So that is the reason negative variation is. ये बिल्कुल वैसी ही जैसे आप फंक्शन को डिकम्पोज करते हैं ना. You have a function f. You decompose the function as f plus minus f minus. यहाँ भी बिल्कुल वही हो रहा है. म्यू आप डिकम्पोज कर रहे हैं, म्यू विच इज अ साइनर मेजर, आप उसको डिकम्पोज कर रहे हैं एज म्यू प्लस माइनस म्यू माइनस. और वहाँ आपको पता है, इफ यू टेक द पॉजिटिव पार्ट ऑफ f प्लस द नेगेटिव पार्ट ऑफ f, व्हाट यू गेट मॉड ऑफ f. यहाँ जो मॉड जो है ना, मॉड म्यू जो है, इट इज़ द टोटल वेरिएशन. और टोटल वेरिएशन, हालांकि ये मॉड म्यू नहीं है, ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, इट इज़ समथिंग एल्स, बट यू कैन रिलेट दिस विद मॉड म्यू. वो इस तरह से. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि इफ़ म्यू इज़ अ मेजर, देन पॉजिटिव वेरिएशन ऑफ म्यू इज़ म्यू एंड नेगेटिव वेरिएशन ऑफ म्यू इज़ 0. एंड नाउ व्हाट विल बी द टोटल वेरिएशन इफ़ म्यू इज़ अ मेजर? So mod mu in this case will be, by definition, mod mu is mu plus plus mu minus. Now in this case mu plus is mu and mu minus is 0. So therefore it will be mu plus it will be mu plus 0, which is equal to mu. Because mu plus is mu, mu minus is 0. So mu plus plus mu minus is mu plus 0, which is equal to mu. So mod mu in this case will be mu. So if mu is a measure, तो क्या information मैं आपको दे रहा हूँ? अगर mu measure है तो इसकी जो positive variation है, it will be same as mu. Negative variation will be 0 and total variation again will be mu. So modulus of a measure, total variation of a measure is the measure itself actually. है ना, वही दिखा रहा हूँ ना मैं आपको. If mu is a measure, then total variation of mu is same as mu.
लेकिन वो याद रखिएगा, ये जो पॉजिटिव वेरिएशन, टोटल वेरिएशन और नेगेटिव वेरिएशन है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द हार्न डिकम्पोजिशन। हालांकि जब आप इनको कंप्यूट करते हैं म्यू प्लस और म्यू माइनस में, वहाँ आप इनिशियली यू आर यूजिंग अ हार्न डिकम्पोजिशन, बट हार्न डिकम्पोजिशन थ्योरम जो है ना, इट इज बेसिकली द हार्न डिकम्पोजिशन थ्योरम विच गारंटीज दैट दिस measures, positive variation, negative variation and total variation, are independent of the Hahn decomposition. ठीक है, तो आज मैंने अब एक तो ये थियरम प्रूव करी which is the Hahn decomposition theorem, and as a consequence of this theorem मैंने आपको दिखाया कि that every signed measure can be written as difference of two measures where one of them is finite. ठीक, and it is actually the converse of that remark. The remark follows trivially, huh? Trivially we know that. Actually it follows from the definition. If you have two measures, one of them is finite, and if you take the difference will be a signed measure. और यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस ये जो ऑब्जर्वेशन थी तब हमारी कि दैट डिफरेंस ऑफ टू मेजर्स वेयर वन ऑफ देम इज फाइनाइट इज अ साइनड मेजर, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, और उसको एस्टैब्लिश करने के लिए वी आर यूजिंग दिस हार्न डिकम्पोजिशन थ्योरम. Hahn decomposition theorem actually enables us to establish the converse. और मैंने वो यहाँ दिखाया आपको कि that mu it can be written as difference of positive variation and negative variation, where positive variation and negative variation are measures and one of them is necessarily finite. कौन सा finite है वो हमें नहीं पता, लेकिन एक finite होगा इनमें से. दोनों इन्फिनाइट नहीं हो सकते, वो मैंने आपको दिखाया था. अगर दोनों इन्फिनाइट होंगे तो फिर यू विल हैव दिस सिचुएशन, यू विल हैव अ सिचुएशन वेयर म्यू अटेन्स बोथ द इन्फिनिटीज, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल.